वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी कंट्रोलिंग केस स्टडी क्वेश्चन देखिए। नंबर 1, व्हाट शुड बी डन व्हाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग व्हेन स्पेशली इन द इम्पोर्टेंट एरिया डेविएशन गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। देखिए, जब when deviation in important area go beyond the acceptable range, managerial controls such as training, development, educating the employees become the need of the horse. It must be ensured that no further deviation from the target occur in future में कोई जो deviation है वो नहीं होना चाहिए। आपने corrective actions लेने हैं। Hina Sweets is renowned name of quality sweets since 1935. Harsh, the owner of Hina Sweets, was worried as the sales had declined during the just 3 months. When he inquired from the sales manager reported that there was some complaint about the quality of sweets. Therefore, Harsh ordered for sample checking of स्वीट। आइडेंटिफाई द स्टेप टेकन बाय हरीश। देखिए, इसमें क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का उसने मेजरमेंट किया है। ठीक है। नेक्स्ट, महिमा जैन इज द सीनियर मैनेजर इन द एडवाइजरी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कोर्ट्स लिमिटेड। सी रेगुलरली प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ हर सबॉर्डिनेट एज ए पार्ट ऑफ द अप्रीजल। तो इसमें भी क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट चल रहा है। Kannu is appointed as a factory manager in gel pen manufacturing company. He was given a target of producing 1 lakh gel pen per month. He knows that the essence of manage is achieve desired results, but he does not now how to ensure that the work goes on according to plan. Guide him by specifying the step in process so that he is able to achieve the desired results. तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, उसके बाद कंपैरिजन करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का करना है, कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है, और लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आपने कंट्रोलिंग के प्रोसेस लेने हैं। AS Limited is a large company engaged in assembly of air conditioner. Recently, the company had conducted the time and motion study and concluded that an average day is assembling of 1000 units of air conditioners. The company is providing attractive allowances to reduce labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even then, the assembly of air conditioner per day is 800 unit only. The reason of the company compared actual performance of each worker and observed them through CCTV. That some of the workers were busy in gossip. Identify the functions of management discuss above. तो देखिए, इसमें कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं और उसके स्टेप बताने हैं। तो आपने परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना है, उनका कंपेयर करना है और उनका एनालिसिस करना है। इनसे रिलेटेड जो भी लाइन है उनको क्योटेड करनी है आपने। विकास was the chief operating officer of Yetlet Limited, a company providing advanced software solution of Indian Defence Service. They had been carrying on business successfully for the last 12 years and earning through enough profit. But from the last 1 year, they realized that through the business is getting big orders which are being fulfilled in time. Even then, the revenue kept on decreasing. Vikas was not able to find out where the problem was. He started keeping a close check on the progress of activities, and could sense that something was wrong. He wanted to take some action before any major damage could be done to the business. Vikas appointed a cybersecurity expert who monitored the company's process and found out that the computer operator was
deleting the entries from the computers and pocketing the revenue. He was caught and handed over to the police. This create an atmosphere of order and discipline in the organization and help in minimizing dishonest behavior on the part of employees. आइडेंटिफाई द फंक्शंस, तो फंक्शंस तो कंट्रोलिंग हो गया। अब इसमें क्या है, सबसे पहले द वे विच कंट्रोल फंक्शन मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तो हेल्प इन अकम्प्लिशिंग गोल, जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इम्प्रूव करना है इसमें। नंबर 7 पे देखेंगे, वेनिबर लिमिटेड set up a manufacturing unit at Bhiwadi in Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealers all over the country. Their production target was 500 geysers per week. It was decided by the management that variations in production up to 10 units would be acceptable. At the end of first week, the production was 450 geysers. The next week production increased to 470 geysers. A week later production was 460 geysers. On investigation, it was found that fluctuation in production was due to irregular supply of electricity. The above para discusses some of the steps in the process of one of the functions of management. तो देखिए इसमें क्या है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना है, आपने क्या करना है, एनालिसिस, डेविएशन, और उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है, और लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेने हैं आपने उनसे रिलेटेड। Textile manufacture super textile report 43% falls in the profit in the fourth quarter ended 31st March 2017, which is beyond the acceptable range 25% decided by the company. This was due to higher fuel cost and lower yield in account of demonetization. The company aimed to implement cost saving measure by restructuring contract and business process to meet its target in the future. Name the functions controlling और steps वही deviations analyze करने हैं, corrective actions लेने हैं आपने। Rudrakshi Limited is engaged in manufacturing high-end luxury pens. The target production is 700 units daily. The company had been successfully attained this target until 3 months ago. Over the last 5 months, it has been observed that daily production varies between 600 to 650 units. Identify the functions controlling. अब वही setting standard परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल का स्टैंडर्ड से, और लास्ट में जो भी डेविएशन है उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।